राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को छू पाए। कांग्रेस के पूरे इतिहास में कांग्रेस का ऐसा पतन कभी नहीं हुआ। भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबईतील शेवटच्या प्रचार सभेचं आयोजन नुकतंच बीकेसी येथे करण्यात आलं होतं। नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे एकाच व्यासपीठावर जेव्हा एकत्र आले तेव्हा उपस्थित जनसमुदायाने मराठीत घोषणा देऊन जल्लोषात त्यांचं स्वागत केलं। आपल्या भाषणाच्या अगदी सुरुवातीपासून मोदी काँग्रेसवर आपला निशाणा साधत असल्याचे दिसले। मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की ही निवडणूक अगदी वेगळी रंगणार असून काँग्रेसला मोठ्या फरकाने पराभवाची धूळ चाखावी लागणार आहे। काही राज्य असेही असणार आहेत जिथे काँग्रेसच्या उमेदवारांचा डिपॉझिट जप्त होण्याची पाळीही ओढावणार आहे। पुढे ते असंही म्हणाले की काही राज्यात काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीमधील पक्ष आपली खातीही खोलू शकणार नाहीत। कोणत्याही राज्यात ते 2 अंकी संख्येचा आकडा पार करू शकत नाहीत। और देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को छू पाए। कांग्रेस के पूरे इतिहास में कांग्रेस का ऐसा पतन कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यावरही टीका केली। तसेच देशात रेल्वे विद्यापीठची गरज असल्याचीही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले। अकेले रेलवे को लाखों लोगों की जरूरत होती, लाखों लोगों की रोजगारी में। क्या रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती क्या? हिंदुस्तान के 4 कोने में रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी हो और रेलवे में जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए उसकी पूरी ट्रेनिंग वहां हो। रेलवे में बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपके गले उतरता है ना? आपको समझ आता है ना? उनको नहीं आता है। त्यांच्या प्रमुख निशाण्यावर होते राहुल गांधी, ज्यांचा उल्लेख ते शहजादा म्हणून करतात। राहुल गांधींनी गरिबांच्या घरी जाऊन जी त्यांची भेट घेतली यावरही त्यांनी टीकास्त्र सोडलं। मोदींनी सांगितलं की पर्यटनाची एक नवीन पद्धती अवलंबली जावी। त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की आज भारतीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देणं ही काळाची गरज झाली आहे। भारत के पास पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए सब कुछ है भाइयों। दुनिया पागल हो जाए इतना हिंदुस्तान के पास है। लेकिन आए दिन मां बेटियों पर बलात्कार, विश्व भर में भारत की छवि का नुकसान, दिल्ली बलात्कार की नगरी बन गई। भाइयों बहनों, 10 साल में टूरिज्म बढ़ने के बजाय देश का टूरिज्म घटता गया। बीकेसी मधील मोदींच्या रॅलीपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना आपलं समर्थन दर्शवलं होतं। परंतु नरेंद्र मोदींनी मात्र व्यासपीठावर ही घोषणाच करून टाकली की मतदारांनी कोणत्याही संभ्रमात न पडता महायुतीला विजयी करावं। ब्युरो रिपोर्ट NMTV बातमीपत्र।